and NO. Okay, so very good afternoon, guys. So today we are having a doubt clearing session. Okay, and this doubt clearing session is for the physical chemistry. So here we were doing the chemical kinetics chapter, right? And in the last class we discussed a lot that what about the zero order reaction, you know, what is the rate of reaction, how to determine it, its differential rate law, its integrated rate law, and how we can determine the rate of reaction at different time intervals. When there is a half lifetime, when there is a 3/4 lifetime, all that we have discussed. Okay, so today we will be moving little forward with the questions and your doubts. Okay, I will make you do few of the questions related to that so that you will get the applicability. Okay, why we are learning about the order of reactions, how we can determine the rate, you know. So with the help of the questions, you will be able to understand its applicability. So let's begin with it. Question tab, you have shared the doubt, Vansh? Okay. Okay. This was the question that we have already done now. DPP अभी नहीं होगी DPP. Rahul, you won't be able to complete the DPP now. Okay, अभी तो बहुत कुछ रहता है. अभी तो I need to discuss with you the rate, how to determine the rate of, how to determine the order of reactions, what are the methods to determine the order of reactions, and many other things we have to discuss अभी तो. है ना? Arrhenius theory we have not yet discussed. The second order, the third order we have not yet discussed. है ना? तो जितना हो गया उस पे questions करेंगे. This question was done. ठीक है? तो ऐसे जो भी questions हैं जो हम लोग कर सकते हैं अभी, I will make you do. Tell me the answer for this question. इसका आंसर बताओ. Just give me a okay? Giving a poll. Very good. Perfect. So the right answer would be B. You know, minus का dA by dt is equals to 1/4 dV by dt. So any doubt? No? Very good. This question. Yes, Shivam. Appearance of B. Okay. Basically, the question was saying for a yeah, this is the rate of appearance of B. Yeah, that's true, Nandana. It was appearance. It's mistype. It is appearance. The rate of disappearance of A and the rate of appearance of B. Exactly. Clear? Can you do this question? Yeah, it will be B, Varshish, no? क्या doubt क्या आ रहा है इसमें? This was the question. For a reaction half of A and 2B, so I know that the rate law expression will be minus का 1/2 dA by dt is equals to 1/2 positive का, this is going to be 2. This is going to be 1/1/2 minus का 1/1/2 dA by dt is equals to 1/2 dB by dt. This is it. So what it comes out to be, you have to tell the rate of disappearance of A. A is disappearing is related to the rate of appearance of B by the expression. This will be related to with this particular expression. So what is it? Just I simplify it. So I just need to bring 2 over there, minus ka 2 dA by dt is equals to 1/2 dB by dt. Okay, so which example is this? So which is this? Is there any minus ka 2? No. So I will be dividing this by 2 and this by 2. Then this will be cancelled. Minus ka dA by dt is equals to 1/4 dB by dt. Clear? Vansh, in the appearance and in the disappearance, both the times we have to write down the coefficients. 1 upon coefficients तो हमें करना ही होता है, Vansh, whether they are disappearing elements or whether they are the appearing elements. In both the cases, we have to divide it by the coefficient while writing the rate law expression. Clear?
अच्छा, तो one of you was saying कि ma'am what we have studied till now, please give us a quick revision. तो बच्चे as of now what we have discussed is, do I have a short note over there? एक मिनट, हमने क्या पढ़ा था अभी तक? We have studied the rate of reaction. Rate of reaction. So rate of reaction I have discussed with you in the terms of rate of disappearance of reactant, rate of disappearance of reactants, and the rate of appearance of a product. This we have studied by this particular plot. At time t is equals to 0, the concentration of reactant will be this. This is the concentration of reactant at time 0, which is C naught. Achha, what is the concentration of product at time 0? What is the concentration? That is 0. The concentration of product will be 0. At time 0, the concentration of product will be 0. So what will happen when time will be t? The concentration of the reactant decreases. So at any time t, I can say that the concentration is Ct. So we know that initially the concentration of product is 0, but at time t, the concentration of product will be increasing. So at time t, the concentration of product will be Ct, right? Okay, so the concentration of reactant is decreasing and the product is increasing. So if I want to say what will be the change, what is the rate? So what do you say? Rate is always final minus initial. So what is the final concentration there? So final concentration means initially it was C naught and then it is Ct. So you would say कि finally it is Ct minus C naught. This is what you would do, Ct minus C naught divided by T, that is delta T, है ना? That is अब time क्या हो जाएगा? The other time is T minus 0. This is what you would do. So this is your rate of reaction. This is your rate. अच्छा, here what is happening? Here the initial concentration was 0 and then later the concentration is Ct. Ct. So later it is Ct and initially it is C naught divided by. So what is the time initially? So what is the time right now? T. Initially it was 0. So this is also the change in concentration per unit, the change in time. है ना? This is what we are doing. That is Ct minus C naught, T minus 0. Now here it is a reactant, so this has to be decreased. है ना? तो देखो ये वाला जो concentration है आप ये बताओ मुझे Ct और C naught में which is greater? Ct और C naught में which is greater? Ct और C naught में which is greater? Ct is less, C naught is greater. तो क्या आएगा यहाँ पे? This value will be negative or positive? If you know कि C naught is greater, ये value ज़्यादा है as per the graph rather than this value, so this whole value will comes out to be negative. तो समझ में आया that why the rate of disappearance of reactant is negative? Why we will be getting a negative value? Okay. तो जब disappearance हो रहा है तो we will be getting a negative value. अच्छा, what is happening over there? Ct और C naught में which is greater? This is, let's say this is C naught. Ct is greater. So this will be positive. So this value is going to be positive, right? So rate of appearance of product will be positive. Now, well understood. Why are we getting a negative positive signs? Okay. So as per this, I can say that rate is equals to change in concentration per unit, change in time. ऐसा कह सकते हैं. So I can also say that this is equals to dc by dt or dn by dt, मतलब कुछ भी, और dp by dt. किसी भी टर्म्स में हम लोग बोल सकते हैं, है ना? Whether it is concentration, this is number of moles, or this is the pressure, right? तो ये डिस्कशन हम लोगों ने किया था. So as per this, then we have discussed, okay, फिर हम लोगों ने रेट लो एक्सप्रेशन बताया था. Let's say a plus 2b gives you c plus 2d. तो क्या करोगे यहाँ पे? This will be expressed by minus का dA by dt is equals to 1 by 2 db minus का db by dt is equals to positive का 1 by 1 dc by dt is equals to positive 1 by 2 dd by dt, right? This is our rate law expression. ये क्या हो गया? Rate law expression. और इसका डेरिवेशन भी मैंने आपको बताया था. Its derivation also we have discussed, right? Okay, and then after we have discussed, okay, what is the, as per the rate law, how we can express the rate of reaction. So as per the rate law, let's say this is a plus b plus c gives you d plus e. Okay, so rate is directly proportional to the concentration of any specific species. Okay, this is not necessary कि a b c तीनों पे depend करे. The rate of any specific species a or b की power order, इसकी power l m, and this l plus m will be the order. तो ये जो rate of reaction होता है as per the rate law, ये जो rate होता है is directly proportional to the concentration of any specific reactants. Okay, अच्छा आप एक बात बताओ, tell me, when you make curd from milk, तो milk से curd का जो transformation है, that depends upon the milk or that depends upon the curd that you have added to it to make the curd. दोनों पे डिपेंड करता है. Okay, तो rate of reaction किस पे डिपेंड करती है? Yeah, I must take a very good other example. This could be any number ना, L और M कुछ भी हो सकता है. L and M are not coefficients. L and M जो भी रहेंगे आप उन सबको ऐड करके you would be telling it about the order. They will be telling you about the order. So basically from where I have written this rate equation, I have written this rate equation from the rate determining step. जैसे आपको याद है कि जब आप रिएक्शन करते थे इन द मोल कांसेप्ट N2 + 3H2 gives you 2 moles of NH3 or something आपको दिया हुआ है, तो you know that there will be a limiting reagent concept. So let's say that your limiting reagent is hydrogen. So the amount of formation of ammonia depends upon nitrogen or hydrogen. I'm saying that this hydrogen is your limiting reagent. तो अब अमोनिया का प्रिपरेशन किस पे डिपेंड करेगा? हाइड्रोजन पे डिपेंड करेगा ना. तो सिमिलरली अगर मेरी रिएक्शन हो रही है A B C D is giving me D और E, तो ये जो मेरा रिएक्शन हो रहा है इसका रिएक्शन का फॉर्मेशन किस पे डिपेंड करेगा? इज दिस कंपल्सरी कि तीनों पे डिपेंड करे? अच्छा, लेट्स से योर टीचर हैज गिवन यू वन प्रोजेक्ट, है ना, और उस प्रोजेक्ट में उसने सिद्धार्थ को, विशाल को और शुभम को डाल दिया, है ना. तो वी हैव नोटिस्ड कि सिद्धार्थ एंड विशाल आर ऑफ नो यूज. सारा का सारा प्रोजेक्ट का काम किसने किया? शुभम ने किया. तो ऑन होम द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स. सोचो जरा, शुभम पे डिपेंड करेगा ना. अब शुभम ही कर रहा है, बाकी दोनों तो लेजी होकर बैठे हैं, है ना. तो एज सून एज शुभम विल फिनिश द वर्क,
या काम हो जाएगा, अदरवाइज अगर शुभम ही स्लोली काम करेगा तो काम डिले रहेगा, है ना? तो वी हैव टू लुक ओवर कि अल्टीमेटली काम कर कौन रहा है, ऑन व्हिच द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। ओके, या फिर क्या होता है कि क्या था, देयर वाज अ प्रोजेक्ट दैट यू हैव टू डू टुगेदर, आपने शुभम को व्हाटसोएवर द नेम्स आई हैव टेकन, वी कैन चूज अनदर नेम्स, विशाल, शुभम एंड सिद्धार्थ, ठीक है? तो हमने क्या किया, हमने हमने कोई प्रोजेक्ट करना था, हमने बोला था कि भाई ये काम करना, बैटरी ले आना, इट इज अ साइंस प्रोजेक्ट। तो हमने ना किसको बोला, विशाल को बोला कि विशाल बैटरी लेकर आना, है ना? तो सब कुछ हो गया, यू हैव कंप्लीटेड द होल प्रोजेक्ट, सब कुछ लगा दिया, सारी चीजें अरेंज हो गई, है ना? बट यू डोंट हैव अ बैटरी। तो अल्टीमेटली क्या प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाएगा? विल यू बी एबल टू शोकेस द प्रोजेक्ट टू योर टीचर? दिखा पाओगे? नहीं। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करा? तो प्रोजेक्ट अगर लेट होगा तो किसकी वजह से होगा? किसको ब्लेम करोगे आप? तेरी वजह से प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, तेरी वजह से वी हैव गॉट द लेट, तेरी वजह से -2 हो जाएगा आज प्रोजेक्ट में, विशाल की वजह से, है ना? तो अब समझ में आ रहा है व्हाट इज रेट डिटरमाइनिंग? बिकॉज़ द वन हू हैज नॉट ब्रॉट द बैटरी, तो आप उसे चला के दिखा ही नहीं सकते। लेट्स से आपने विंडमिल बनाया या कुछ भी बनाया, एक्स वाई जेड इन अ प्रोजेक्ट। सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो द रिएक्शन इज गोइंग, ओके ठीक है, रिएक्शन हो जाएगी, बट अल्टीमेटली देयर वुड बी सम ऑफ द रिएक्टेंट्स, या सारे रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करेगा? नहीं, किसी पे भी हो सकता है, डिपेंड कर सकता है। सो सम ऑफ द स्टेप्स इन द मैकेनिज्म वी विल गेट टू नो ना। तो इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, बाय डूइंग द मैकेनिज्म ओनली वी विल गेट टू नो, ओके व्हिच स्टेप इज गोइंग स्लोअर, है ना? तो उसी पे हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करेगा। तो हो सकता है कि ए की पावर कुछ एल हो, बी की पावर एम हो और सी की पावर 0 हो। तो अगर सी की पावर इज 0, तो क्या सी पे मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रेट डिपेंड कर रहा है? नो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन सी, इट डिपेंड्स अपॉन ए एंड बी। तो अगर ए की पावर कुछ है, एल कुछ है, तो एल प्लस एम विल बी माय ऑर्डर। ओके, दिस इज इट। Now when you are removing this proportionality sign, you have to use any constant, so this would be rate is equals to k a की power या anything, any concentration की power order, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है? So this is going to be the order. तो this is the rate equation that we have discussed, and उसके बाद what we have discussed, rate बताने के बाद I discussed with you, okay, we have to find a relationship between the two rates for the zero order reaction. For the zero order reaction we have done it कि A से अगर आपको P मिल रहा है, initially the concentration is A, the P is 0, बाद में क्या हुआ, इसमें से X dissociate हुआ and we are getting it as a X. तो आप इसे कैसे बताओगे, what is the concentration? So you can tell this in the terms of reactant as well, you can tell this in the terms of product as well. तो reactant और product दोनों के terms में हम लोग बता सकते हैं। तो in the terms of reactant अगर मुझे बताना है, in terms of reactant अगर मुझे बताना है, तो this comes out to be equals to rate is equals to K naught और A at time t ना, at time t, किसी भी टाइम t पर हम लोग बात कर रहे हैं, it depends upon the a minus x, ये इसी पे डिपेंड करेगा, rate is equals to k naught a minus x पे डिपेंड करेगा। और in the terms of अगर मैं प्रोडक्ट ले रही हूँ तो, और अगर मैं ये इन द टर्म्स ऑफ रेट, अगर मैं इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ले रही हूँ तो इट डिपेंड्स अपॉन k नॉट पावर x, x पे डिपेंड करेगा। नाउ वी आल्सो नो एज पर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, जो पिछला वाला हमारा रेट इक्वेशन था, उससे भी हमने क्या समझा था कि चेंज इन कंसंट्रेशन माइनस का क्या समझा था, वी कैन इक्वेट इट विद व्हाट, dA by dt, dA by dt, माइनस का dA by dt, ओके आई कैन से दैट माइनस का dA by dt इज इक्वल्स टू k नॉट a minus x और माइनस का dp by dt, सॉरी इधर ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का dp by dt इज इक्वल्स टू k नॉट x। बस ये किया था, फिर हमने इसका डिफरेंशियल रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाला था, है ना? चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम आएगा व्हेन यू विल लाइक डू इट्स डिफरेंशिएशन, राइट? सो ऑल दैट थिंग वी हैव डिस्कस्ड। उसके बाद वी हैव आल्सो डिटरमाइंड एट डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। तो आई टोल्ड यू कि फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या समझाया था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए लेट्स से दिस इज A to P is forming, इनिशियली यू हैविंग द कंसंट्रेशन A, दिस इज 0, तो ये तो है टाइम इज इक्वल्स टू 0, टाइम आपका हाफ हो सकता है, टाइम आपका 3/4 हो सकता है, टाइम आपका कंप्लीशन हो सकता है, दैट इज 100% हो सकता है। तो दिस कुड बी 50% ऑफ द टाइम, 75% 0 और 100% कंप्लीशन पे क्या रहेगा। तो यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन तो हमने पढ़ा था कि जब भी हम लोग बात करते हैं डिसोसिएशन ऑफ A पर यूनिट टाइम की, दिस इज इक्वल्स टू k नॉट, क्योंकि A की पावर ये हमारा ऑर्डर होता है, ऑर्डर इज 0, तो इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द कंसंट्रेशन, तो ये तो हमारा कांस्टेंट होता है। तो अगर ये हमारा तो रेट अगर हमारा कांस्टेंट है, तो इफ दिस इज A, तो एट 50% दिस विल रिमेन A by 2 एंड दिस विल रिमेन A by 2। अब 75% ऑफ द रिएक्शन हो गई है, तो इसका मतलब ए का 3/4 हो चुका है और 1/4 बचा है, 100% रिएक्शन हो गई है, तो ये 0 बचा है और ये पूरा का पूरा ए बन गया है। सो दिस इज व्हाट हैपेंड, क्लियर? इस तरह से हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे। नाउ क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी? नथिंग ना, ये तो फ्री होगा, सिंपल। रेट इक्वेशन इज सेइंग दैट इट डिपेंड्स अपॉन a and b की पावर 2, तो दिस विल बी 1 + 2, 1 + 2 ये हो गया l, ये हो गया m, तो दैट इज 1 + 2 इज 3। अच्छा, अगला क्वेश्चन व्हिच आई एम गिविंग टू यू राइट नाउ इज दिस वन, ये करो। हाँ, श्योर बात, आई एम लुकिंग एट इट, प्लीज डू दिस क्वेश्चन। ये कर लिया है 4 5 और 6, ये अभी दिस इज फ्रॉम रेडियो एक्टिविटी, ये अभी करेंगे, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप वी विल बी मूविंग, मुझे पता है कौन सा कराना है, ओके? शुभम, ओके, वांश का क्या डाउट है? आई एम फेसिंग प्रॉब्लम इन शॉर्टकट ट्रिक ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स, मैम आई एम आल्सो फेसिंग प्रॉब्लम इन क्वेश्चंस। शॉर्टकट ट्रिक कौन सी थी? अच्छा चलो, लेट अस डिस्कस विद द क्वेश्चंस, ठीक है? अभी क्वेश्चंस के साथ साथ डिस्कस करते हैं। अरे बाप रे, सिद्धार्थ, इट्स अ होल स्टोरी। योर डाउट वाज लेफ्ट इन द ऑर्गेनिक लेक्चर, गाइस प्लीज गिव अ वाइल, कल भी रह गया था, आज भी रह गया, तो बस हो जाएगा कबाड़। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये क्या है? अच्छा लॉन्ग स्टोरी, सॉरी मैम, अच्छा ये सॉरी है। ओके, आई वांटेड योर गाइडेंस, एक्चुअली आई एम अ ड्रॉपर एंड आई होप यू नो ऑलरेडी, एक्चुअली आई डिडंट नो ऑलरेडी सिद्धार्थ, हां आई नो ऑलरेडी, या
dropper. Okay, and I have filled the application form for Delhi University merit-based undergraduate admission. Please suggest me that if I get qualified under the cutoff, what courses should I prefer to pursue? Although I'm not so sure about my selection, but still. So you are a dropper and you're preparing for 2022 exam, Siddharth? Ma'am, please suggest me that if I get qualified under the cutoff, what courses should I prefer to pursue? Although I'm not so sure about my selection, but still, I'm a PCM student with computer science as an additional subject, and I want to pursue a course जो कि ज़्यादा hectic now, so I can easily continue with my JEE preparation. Acha. Also, ma'am, being straightforward, I would like to pursue a course which would be able to get me a decent job after that. I don't know how do I sound, but please suggest something as a teacher, mentor, guide, well-wisher, or maybe an alumni of me in future. I'm extremely sorry, ma'am, to ask such a query as there are no counselors for me here in my present. Parent asked me to ask my teacher about some career counseling. I'm again saying I'm not so sure that I will get any course of my choice or not, but still, just in case, I just want your opinion. तो ओवरऑल सिद्धार्थ मुझे क्या नजर आता है डर फ्रॉम द होल मैसेज आई कैन सी क्लियरली कि आपको ये डर है यू वांट टू प्रिपेयर फॉर जेई यू आर like putting effort for your JEE examination for the next year but you have this thing fear कि अगर मेरा JEE में नहीं हुआ तो what I would be doing है ना तो मैं क्या करूंगा और मेरा साल भी बर्बाद हो जाएगा एक साल भी खर्च हो जाएगा आज मैंने ड्रॉपर्स के लिए एक सेशन लिया था YouTube पे ठीक है थोड़ा टाइम ले तो बाद में देख लूं अब कहना क्या चाहती हूं मैं यही कि योर गोल इज जेई यू आर डूइंग इट्स प्रिपरेशन जब आप 12th के साथ प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपके साथ ये प्रॉब्लम था दैट यू वर हैविंग क्लास 12th स्कूल प्रेशर यू वर हैविंग द बोर्ड्स प्रेशर है ना सो दैट्स व्हाई यू वर नॉट बीन एबल टू गिव इन योर 100% right and now again you are putting your legs in two boats one in JEE and the another in such kind of any of the course that is from Delhi University if in case I won't get any good admission or any good college after my JEE so at least I will be in safe hands है ना तो बच्चे these two things will not work together Siddharth I can see you are a good student you are improving a lot and you are at the right platform you are over an academy तो you please leave everything just focus over JEE for the whole year आपको कोई फॉर्म भरने की या प्लेसमेंट देने की या कोर्स सिलेक्शन देने की जरूरत ही नहीं है गाइस सी व्हाट आर यू डूइंग व्हाई यू आर थिंकिंग कि ना दिस ईयर मींस अ लॉट these 365 days will not come back again अरे व्हाट डू यू थिंक कि अगर जेई मतलब इफ यू वांटेड आईआईटीज यू वांटेड एनीथिंग आपको क्यों लगता है ऐसा कि अगर आईआईटीज नहीं मिले तो कुछ भी नहीं मिलेगा अरे इफ यू वांटेड आईआईटीज यू वुड गेट एनआईटीज ट्रिपल आईटीज you are a good student and why you, and if you will be like giving your whole year to this JEE preparation then definitely you will get a selection बच्चे मेरी बात समझ में आ रही है सिद्धार्थ एज अ एल्डर सिस्टर आई वुड से ड्रॉप द थॉट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एज ऑफ नाउ यू आर a determined student towards your JEE examination just focus over that abhi tak by the time you were in 12th you were not being able to focus because you were doing two things simultaneously one was JEE one was your class 12 board examinations right and now again you want to do two things simultaneously one was your college and the other is your JEE preparation guys Delhi University say whether you pursue any course it would be very tough to clear the exam when you get into the college you will be having the attendance pressure you will be having the assessments their internal assessments and they will be having their internal examinations the external examinations you will be preoccupied you won't get time for JEE then भूल जाओ JEE सपना सपना रह जाएगा कोई भी कोर्स ले लेना okay so give your 1 year to JEE and definitely you get the results आप ना रिस्क नहीं लेना चाहते हो you know there was a scam 1991 there was one dialogue नहीं देखी scam रिस्क है तो इश्क है exactly तो रिस्क लेनी पड़ती है okay तभी you would get something अगर if you are not ready for risk you won't get anything तो this is for everyone and though I have taken ये नहीं सिद्धार्थ यू हैव टू एक्चुअली आप डर के भी नहीं जी सकते ना व्हाट यू आर इन अ फियर ऑफ लूजिंग आपको लग रहा है कि जेई नहीं हुआ तो ये भी नहीं होगा तो बेसिकली योर डिटरमिनेशन इज हाफ हार्टेड ना तो हाफ हार्टेड डिटरमिनेशन से नहीं होगा ना जेई भी नहीं होगा फिर कॉलेज भी नहीं होगा अरे आई नो एवरी स्टूडेंट इज हैविंग सच काइंड ऑफ फियर बच्चे सबको लगता है कि ये नहीं मिला तो ये सही ये नहीं मिला तो ये सही अरे गिव योर बेस्ट गिव 100% मिलेगा और नहीं मिला अच्छा ठीक है आई एग्री विद यू कि सिद्धार्थ प्रिपेयर फॉर द होल ईयर उसको उसने जेई का पेपर भी दिया अब तो जेई के भी आर हैविंग 2 3 4 अटेम्प्ट्स तो क्या 3 4 अटेम्प्ट्स में भी पेपर नहीं निकलेगा अच्छे से कैसी बातें करते हो यार इफ यू प्रिपेयर फॉर द होल ईयर तभी 3 4 पेपर अटेम्प्ट्स में पेपर नहीं निकलेगा ओके तो यू हैव नो प्रेशर यू हैव ओनली वन थिंग टू डू दैट इज जेई प्रिपरेशन है ना और यू हैव 2 to 4 अटेम्प्ट्स तो आपको मिलने मिलने हैं तो आई बिलीव कि 2 अटेम्प्ट्स दो 4 अटेम्प्ट्स देने का कोई पॉइंट नहीं है गिव ओनली 2 अटेम्प्ट्स ओके प्रिपेयर होल हार्टेड एंड यू विल गेट द सिलेक्शन अगर मान लेते हैं कि आपको आईआईटीज नहीं मिले कोई बात नहीं ट्रिपल आईटीज आर देयर न्यू आईटीज आर देयर न्यू आईटीज भी नहीं मिला ट्रिपल आईटीज आर देयर ट्रिपल आईटीज भी नहीं मिले एनआईटीज आर देयर वो भी नहीं मिले बिट्स प्लान भी दोगे राइट मतलब क्या नहीं मिलेगा ऐसा तो है नहीं है कि अगर ये सब नहीं मिले तो एकदम गड्ढे में आई रियली डोंट फील इफ यू स्टडी देन व्हाई यू वोंट गेट एनीथिंग आर यू गेटिंग माय पॉइंट साल बर्बाद नहीं करना साल अच्छा एक बात बताओ सिद्धार्थ सिद्धार्थ अगर आपका साल बर्बाद हो गया तो शादी के लिए लेट हो जाओगे इफ आपका साल बर्बाद हो गया तो आपकी जॉब एक साल लेट हो जाएगी सोचो मतलब अगर एक साल लेट अगर कमाना शुरू किया तो क्या फर्क पड़ेगा उससे अगर जॉब एक साल लेट लगी आपके दोस्तों की पहले लगी तो क्या फर्क पड़ेगा थिंक अबाउट अभी बिकॉज ऑफ ऑल दिस कोरोना एवरीवन हैज बीन गॉन 2 इयर्स बैक देयर वर मेनी फैमिलीज दोस हु हैव नॉट अर्नड अ सिंगल पेनी फॉर द होल ईयर तो क्या उनकी लाइफ रुक गई थिंक ओवर यू ऑल थिंक ओवर आई हैव स्टार्टेड अर्निंग एट द एज ऑफ 23 और 24 हाउ मच दिस मैटर मतलब सोचो जरा अगर मैंने 23 साल में कमाना शुरू किया मैंने 24 साल में कमाना शुरू किया आई हैव स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम द एज ऑफ 23 बट बिकॉज ऑफ सम और सो रीजंस आई एम गेटिंग अ पे ऑफ ओनली 40-50,000 rupees per month 40-50,000 rupees per month है ना but I have given 1 year I got the ITJ selection and started earning after at the age of 24 and now I'm getting the pay of 1.5 lakhs per month 1.5 lakhs per month so which sounds good तो क्या फर्क पड़ रहा है
तो इसमें मैटर करेगा कि आपकी 1 साल बाद जॉब लगी थी? इज दिस रियली मैटर कि यू हैव स्टार्टेड अर्निंग 1 ईयर लेटर? तो सिद्धार्थ, कंपटीशन तो बढ़ ही रहा है। न्यू जनरेशन मतलब यू हैव बीन जस्ट बाय 1 ईयर यू बिलोंग टू द ओल्ड जनरेशन। थिंक ओवर इट बच्चे, थिंक ओवर इट। जस्ट बाय 1 ईयर यू बिलोंग टू ओल्ड जनरेशन। आपका जनरेशन बदल जाएगा। Your parents say, so make them understand that I want to do something big. I want to achieve the things which people achieve at the age of 30. I want to achieve at the age of 22 or 23. Acha, the question which I asked you, do you have answers for that? मतलब your cousin जिससे खुद नहीं हुआ वो आपसे कह रहा है आपसे भी नहीं होगा. Why you are confused? Simple है यार. अच्छा, आपको अपने गोल में कंफ्यूजन है. अच्छा, आपको अपने गोल पे कंफ्यूजन है कि मुझे यही चाहिए या नहीं चाहिए. Tell me. नहीं है. तो बस just look over one goal. अच्छा, मुझे अगर किसी गोल पे निशाना मारना है और मैं इधर-उधर देखूंगी तो मैं मार पाऊंगी? नहीं ना, very simple. I need to be focused. तभी लगेगा निशाना. ये सब ना सुनने में लगता है कि वाकई में बहुत किताबी है. इट्स वेरी लाइक वेरी थ्योरेटिकल कि ऑफ कोर्स मैम निशाने की बात हो रही है तो फोकस तो करना पड़ेगा. बट दैट्स ट्रू फॉर रियल लाइफ एज़ वेल बच्चे. पता है आई हैव बीन एट योर प्लेस एज़ वेल. ओके, मैं आपकी जगह थी. आई हैव आल्सो गिवन माय 11th 12th स्टैंडर्ड. आई डोंट बिलोंग टू सम अदर पास्ट जनरेशंस टू बी वेरी क्लियर. ठीक है, माना था ऑनलाइन का जमाना नहीं था, बट आई बिलोंग टू दिस जनरेशन ओनली. ओके, इफ यू आर 20 इयर्स और 18 19 इयर्स, आई एम आल्सो 30 इयर्स. ओके, तो बट बीइंग एट योर पोजीशन, दिस इज 10 साल पहले भी वही डर था, उससे 10 साल पहले भी वही डर था और आज भी वही डर है कि इफ नॉट दिस देन व्हाट. Exactly. So, bache, your parents are very supportive. They want you to prepare for your JEE. They have like given you the opportunity to have this platform where you can study and make your goals, make your dreams true. So, you just need to be more motivated, more oriented towards your studies, and don't think कि अगर किसी से नहीं हुआ तो आपसे भी नहीं होगा. Okay? So, it's every time an individual's journey. जिसने जैसा किया, जिसका सिलेक्शन होता है वो वैसी बातें करता है, जिसका सिलेक्शन नहीं होता है वो वैसी बातें करता है. The whole thing is that कि मेहनत करोगे तो रिजल्ट मिलेगा. That's it. And it's very clear. जितनी मेहनत उतना रिजल्ट. Hard work is directly proportional to success. That's it. Nandana, you are not able to achieve it. अच्छा, you will learn from your failures as well, बच्चे. आप लोग पैनिक में मतलब you all have to watch 3 Idiots again. क्या पैनिक में कुछ करना चाहते हो? मतलब क्या मतलब मम्मा पापा की कॉलर डाउन हो जाएगी अगर आईआईटी मुंबई या आईआईटी गुवाहाटी मिल गया तो? मतलब टेल मी व्हाट इज गोइंग टू हैपन? आपसे पहले देयर वुड बी अ बैच जिसने जेईई किया जेईई एग्जाम दिया है. उससे पहले भी देयर वाज अ बैच जिसने जेईई एग्जाम दिया है. ओके, जस्ट डू इट फॉर योर ओन. सिलेक्शन होगा आपका होगा, जॉब लगेगी आपकी लगेगी. इफ यू डू एनी एग्जाम एंड यू गेट अ गुड मार्क्स तो आस पड़ोस वालों को क्या फर्क पड़ता है? योर बुआ कॉल्स यू ओनली वन टाइम, बच्चे व्हाट वाज योर रैंक, राइट? एंड देन शी हैज नथिंग टू डू विद योर रैंक. Okay, your uncles will call you for once. Okay, what was your rank? Okay, good beta, that's it. But then after, if you are doing something good, you are doing it for your own. If you are not doing something good, you are losing it for your own. सब कुछ आप ही का है, तो just look over what you want ना. You can't satisfy every other person in the life. ठीक है, आप मम्मा पापा को अंकल आंटी को सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते. So at least satisfy your own self. अपने आप को सेटिस्फाई करो. हाँ, तो चाहिए. तो Siddharth, just give your 1 year and then the next year you will show your mama, that's why I was in this JEE ka chakkar. Okay. ये पागलपन की जरूरी होता है सिद्धार्थ. Many of the students don't have this पागलपन and you have this पागलपन which students like strive for. है ना, ये पागलपन तो चाहिए होता है. सब कह रहे हैं ये बट हम कह रहे हैं ये जरूरी है. That's very necessary. चलो, so let's begin with the topic guys. Oh my god. Oh my god. देखो, let me tell you one thing. Okay. Anybody would like to come over the call? Nandana, you are thinking so beyond. You are thinking so beyond. I would like to take you over the call. Hello, ma'am. Hello. Ma'am, can you hear me? Hello. Can you hear me? Hello, ma'am. Hello. Hello, am I audible? Ma'am, can you hear me? Yeah, I can hear you. Yeah, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, Nandana.
Yeah, ma'am. Like actually, I asked the question because I'm literally studying in Sharjah in UAE, in Okay. Sharjah Indian School, and I Okay. was doing my preparation from there in an academy. Like last 2021 October, I joined actually, so I was not able to complete much of the 11th portions also. And Okay. so I'm literally planning for 2022, but then the board exams are also taking place in this February or April months, right? And during that time I might not be able to give my all for the attempt in JE. I might just be able to attempt only one or two papers of the JE. So I was asking, if I'm not able to crack the 2022 JE, then will I be able to, after 12th, I'm planning to settle in India. Okay. So I was asking, like, if I'm not able to crack 2023 JE, will I be able to give the 2023 paper? Yeah, definitely. Yeah, ma'am. Okay. You would be able to do. Ma'am, and the thing is, like, I am like you said to Siddharth, I'm also a person who is I'm also a person who is really afraid of taking risk. And even every day, like he said, I also have this fear of like whether I'll be able to do it or not. So And basically, Bache, I want to tell you, this is not something like that. Ki if you will be at the top of the building. Okay, and if you will be fallen, you will be like, you will be losing everything. This is not so going to happen. Try to understand this thing. See, okay, I agree. This is a ladder. You are preparing for your examination. Some point of time, you are having your board examinations. You will not be able to like perform better because there would be a lack of practice. है ना? Because there are two things simultaneously. One is your board and the another is JE. So whenever the two things comes together, there would be a problem. जब जब दो चीजें आएंगी आपकी साथ में, you won't be able to perform better. Okay, क्यों? Because your mind will get distracted when you will be like preparing for J. You will be having a fear. Oh my God, I'm having my boards. If you will be preparing for boards, you will be thinking like, oh my God, the J is just 10 days away or 20 days away. How would I be writing a paper? Okay, so whenever the two things will be there, you will always be confused. Okay, and that's why Nandana is having this thing in mind. Ki if I would not be able to like give the 2022 attempt, then what would happen if I go for 2023? I would say, Nandana, you have joined in October. You can give your 100% in 2022, and definitely you can get the results. What I would suggest is, though your 11 portion is incomplete, but I believe because you have already joined in October, so most of all, still it is covered. हाँ, थोड़ा बहुत ही uncovered रहेगा, या you must be having a lack of revision only. Okay, so basically before your board examinations, whatever the exam you having, whether it is in February or March, take it very seriously. Take it as if it is your last attempt. इसको ऐसे लेना जैसे ही आपका last attempt है. Okay, because then after you okay, have ma'am. to prepare your boards. ठीक है, इसको as a last attempt लेना, or whatever the rank you may get, है ना, उस rank के basis पे you would be able to decide whether I will be getting my selection in 2022 only, or I have to like take a drop. So in that result only you have to decide कि मुझे drop लेना है या नहीं लेना है. Are you Okay, getting ma'am. the point? In Yeah, March ma'am. itself, you have to decide this thing. You know why? Because if you decide in March itself, okay, I'm not happy with my result, and I know where I'm lying, what type of level of competition it is, and how much marks I'm getting, and what everything is I'm having in hand. Then after, if you decide that you have to drop in March itself, then for the another attempt you will be getting a year. You will be getting a year. लेकिन अगर आप यही डिसीजन लेट लेते हो ना, जस्ट लाइक अगस्त सितंबर में आके लेते हो, तो यू जस्ट लेफ्ट विद ओनली 6-7 months. सो दिस इज समथिंग लाइक अ ड्रॉबैक. ठीक है, तो डिसीजन ले लिया एंड देन लाइक यू कैन गिव. एंड आई गारंटी यू नंदना, व्हाई यू फील सो, इफ यू आर प्रिपेयरिंग, यू आर वर्किंग, यू आर डूइंग अ हार्ड वर्क, डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग अ सिलेक्शन इन 23 बच्चे. डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग अ सिलेक्शन. अच्छा ठीक है, मान लेते हैं फॉर सम मोमेंट, फॉर एन इंस्टेंस, you are not getting into IIT. Okay, fine, you are not getting into IIT, your rank is 7,000, or let's say your rank is 15,000. तो क्या 15,000 वाले का भी सिलेक्शन नहीं होता? Okay, let me tell you a story. Though I have not prepared for JE, okay, so my real brother has prepared for JE.
he has been went to Kota, he did all those preparation, है ना, उसका भी जेई में सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना, he has not been selected in जेई. So what, he has wasted his 1 year? No, not like this. He has learned a lot through the journey of his preparation. And you know, क्यों? क्योंकि आपने उसके लिए प्रिपरेशन की होती है, you develop those skills, your mental ability has been gone so stronger कि you do well in your college. Then he has done his college from JEC University, that is in Jaipur, in Rajasthan. But he is like, you becomes different, you become different from the other crowd of the college. You know this particular thing. You tackle the things very easily because you have been preparing for such an examination for 2 years of your life. And then after when you get a placement, तो क्या JEC यूनिवर्सिटी से सबके प्लेसमेंट्स अच्छे लगे थे? No, but you could be the one जिसका प्लेसमेंट अच्छा लगे. Why? Because what is education? Education makes your personality, you know. Education क्या है? That makes your personality, that helps in your growth, right? So if you are preparing for some examination, for some competitive examination, means you have that spirit to fight with something, to accept the challenges, to to put the dedication and to be in discipline. तो जो चीजें आप सीखोगे इन 2 सालों में, they will definitely help you and work for you in throughout your life. वो आपकी लाइफ में जरूर आपको हेल्प करेंगी. आई एम हैविंग वन मोर एग्जाम्पल. one of my cousin sister, just like you people are looking over the examples कि यार मेरी cousin ने नीट दिया था उसका नहीं हुआ, तो my parents think कि तुम्हारा भी कुछ नहीं होगा. This is not so, guys. It is just that which examples you want to see. आप कौन से examples देखना चाहते हो? You know, I'm having such examples as well कि uh, my cousin, she was an inspiration for every one of us. She was not having any coaching, she just joined the distant learning programs, है ना, होता है ना, टेस्ट सीरीज बेस्ड ओनली. बस किसी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी क्योंकि शी हैज गिवन इन द एग्जाम इन द 2002. That time there was no such coaching, no possibility of going to quota with everyone, right? So and in those times she has like cleared the examination being in a distant learning. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. You can even, his brother also, he has given the examination, उसका ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद हो गया. अरे if you won't get IIT, you would get something good. बच्चे, आपको क्यों लगता है कि you will get into a dig? Why you think so? ऐसा नहीं है. Okay, yeah, we do agree IITs is the best, but अगर IIT नहीं मिला तो गड्ढे में थोड़ी गिरोगे. You will be a cream layer, you will be a creamy layer, बच्चे, still you will be a creamy layer. Okay. अच्छा एक बात बताओ, you want to be with those students जो बस for the sake of their parents money get into any college? मतलब tell me one thing, there are many students just because their parents are so rich, they get admissions into so much of hi-fi colleges. So you want to be with those students? I really don't want to be with those. मुझे मजा नहीं आएगा. नहीं ना. To be with the one who has achieved something on their own, उस ग्रुप का हिस्सा बनो जो अपनी मेहनत से कुछ पाते हैं. श्योर नंदना, यू कैन कट द कॉल. ओके, एंड प्लीज मूव अ लिटिल अवे फ्रॉम द फियर ऑफ लूजिंग. ये जो होता है ना फोमो, इससे ऊपर उठो. अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा? अरे यू वुड गेट समथिंग गुड. मेरा तो केस ही अलग है, इनका तो नहीं क्लियर हुआ तो ये कम से कम अपनी फैमिली या किसी और को तो ब्लेम कर सकते हैं, बट मैंने तो खुद ही सब किए.
अरे जस्ट आस्क योर पेरेंट्स सिद्धार्थ, मम्मा अगर एक साल लेट हो गया तो क्या हो जाएगा? Say to mama, mama, I don't want to be a government officer. Your parents wants to you to join in. इससे ऊपर उठो। अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा? अरे यू वुड गेट समथिंग गुड। मेरा तो केस ही अलग है, इनका तो नहीं क्लियर हुआ तो ये कम से कम अपनी फैमिली या किसी और को तो ब्लेम कर सकते हैं, बट मैंने तो खुद ही सब किए। अरे जस्ट आस्क योर पेरेंट्स सिद्धार्थ, मम्मा अगर एक साल लेट हो गया तो क्या हो जाएगा? Say to mama, mama, I don't want to be a government officer. Your parents wants to you to join any government office, right? Yes. You know, I don't want to be a any government teacher or something like that. No. चलेगा नहीं मेरे से. They only want government job. So just say to them, mama, no, no government salary. कोई बात नहीं. मम्मा को ये समझाना, मम्मा मम्मा को ये समझाना, मम्मा अगर गवर्नमेंट सैलरी में इंक्रीमेंट मिलेगा तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा ना। मतलब इफ आई विल बी परफॉर्मिंग गुड तो गवर्नमेंट है, उनका तो अपना बेस सैलरी है। इंक्रीमेंट मिलेगा तो 5 साल बाद, तो 5 साल बाद ही मिलेगा, बट मुझे तो 1 साल बाद ही चाहिए। तो आई कैन गेट दैट इन एनी ऑफ द प्राइवेट प्लेटफॉर्म। आई कांट गेट दिस थिंग इन द गवर्नमेंट जॉब। बट दे डोंट वांट गवर्नमेंट कॉलेज। जॉब सिक्योरिटी का करना क्या है? इफ आई विल बी कैपेबल ऑन माय ओन तो मुझे जॉब सिक्योरिटी की जरूरत क्या है? मैं दूसरों को जॉब सिक्योरिटी दूंगा। आई डोंट वांट जॉब सिक्योरिटी। व्हाट काइंड ऑफ सिक्योरिटी? दिस इज अगेन अ फियर, यू नो, दिस इज ओनली अ फियर दैट इज लाइक पुशिंग योर पेरेंट्स कि आप गवर्नमेंट जॉब में जाओ। ओह माय गॉड। कोई बात नहीं, बच्चे देखो, दे माइट बी राइट ऑन देयर पार्ट, है ना? दे माइट हैव लाइक फेस सच काइंड ऑफ स्ट्रगल्स ऑफ सिक्योरिटी, है ना? इसीलिए दे आर लाइक टॉकिंग ऑन दोस पर्टिकुलर नोट्स। दे माइट बी ट्रू ऑन देयर पार्ट्स। सिक्योरिटी चाहिए होती है, बट गाइस यू नो, फिर तो हम जिंदगी भर डरते रहेंगे ना। लाइफ इज ऑल अबाउट टेकिंग अ बर्थ, डूइंग एन एजुकेशन, अर्निंग समथिंग सो दैट वी वुड बी लिव सिक्योरली। बस लाइफ इतनी सी है क्या? आर वी देयर टू डू दिस मच ओनली, कि अभी तक मम्मा पापा दे वर टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्व्स और अब हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन की टेक केयर करें? दैट्स इट। नहीं ना। इफ यू थिंक बियॉन्ड, यू हैव टू डू बियॉन्ड। आज का पूरा सेशन सिद्धार्थ ओरिएंटेड है। अब मुझे समझ में आया ये सिद्धार्थ, व्हाई आई हैव नॉट टेकन योर क्वेश्चन इन द यस्टरडेज ऑर्गेनिक लेक्चर। Yeah, Siddharth, come over the chat and let's finish this discussion. Okay, just say your mama to watch the YouTube session today. I have taken a YouTube session on the Unacademy Accelerate. Just ask her to watch for a few minutes. You may also watch it first, then allow your mama to watch it. नहीं बाबा, I can't talk to anyone. मैं आप ही के सामने बोल सकती हूँ. I can't say anything in front of her. You have to convince your parents. If you think you are right, you will be able to convince your parents. Shivering of thoughts. Oh my God, Siddharth. Siddharth, it's your decision. You know, कृष्ण जी ने भी कहा है, take your decisions and stand by on it. डरना क्यों है? डरना क्यों है? देखो, it's only us. Exactly, that's what I'm saying now, Shubham. I was also thinking that he's very regular and he's very attentive and very answerable to the question. So that's why I'm pushing him so much. The things which students don't do their own, and he has this quality. And this is what I could see. कि हाँ, ये definitely कुछ कर सकता है. So he has to be like more confidence on him also. आपको अपने ऊपर self confidence रखना पड़ेगा. And this is not अभी तो लाइफ आपकी शुरू हुई है. अभी तो मम्मा पापा ने आपको स्कूल में एडमिशन करा दिया था and you were moving ahead. अभी तो this is one starting point. अभी आप इतना डर जाओगे तो लाइफ में पता नहीं क्या क्या आना है यार. मतलब there are many things to come, many decisions to come. नहीं मतलब when you have to choose a girl for your life ना, तब भी ऐसे ही करना यार, अगर ये छोड़ के भाग गई तो शादी करूँ नहीं करूँ? मतलब what is this? हाँ, whether she would be a right girl for me or not? Is there any other option? Let me take another girl as an alternative. हाँ, तो लाइफ ऐसे चलेगी क्या alternate साथ में रख रखकर? Think like.
Equal for security. Exactly. Rank ला के satisfy करो. Prove them. Prove them. Mama, you are thinking that I'm a gold, but I'm a diamond. Okay, prove करो. अभी जितनी मेहनत करो उसे डबल करना शुरू कर दो. Yeah, let's study. Okay, you're a platinum. Yes. हाँ जी. चलो. Let's move forward. टाइम तो बस 20 मिनट्स बचा है. आज तो सारा बातें किया हम लोगों ने. Yeah, Kavin, thanks for messaging. Huh? We are on chemical kinetics. And Nandana, have believe in yourself. Give your 100% for the 2022. Don't think about 23. वो तो बात की बात है. So let's look over the questions. Okay, I have given you this question. Please do let me know what is the right answer for this. We have done this kind of question earlier as well. Do this question. Completely watch your physical chemistry recording class. Okay. Order of only NO is, yeah, with respect to NO only. With respect to NO only. Take a revision of a chapter, Sneha. Do its PYQs. Take a revision, do PYQs. This is the way you need to do. Okay. Yeah, Vansh, I will be discussing this one. So basically, the question has been asked, the following mechanism has been proposed for the reaction of NO with Br2 to form NOBr. So basically, for the reaction of NO plus Br2 gives you NOBr. This is the overall reaction, or we can say that this is the net reaction. And here, this is the mechanism, which is a two-step mechanism. Okay, this is a two-step mechanism. So as per this mechanism, if we want to know, in the second step is the rate determining step. So this is my rate determining step. This is my slow step. And the order of the reaction with respect to NO. So we know that if the rate determining step is this, then I can say that the rate is directly proportional to the concentration of NOBr and the concentration of NO. ये होगा मेरा. Okay, so here the rate of reaction depends upon the NOBr and NO. Okay, so this question is asking if the second step is the rate determining step, the order of the reaction with respect to NO is. So if I would be looking over the NO, I know that this NO is also reacting with the Br2 and giving you NOBr2. So this is a reversible reaction. So there we are also having one more equilibrium constant. So if I will be writing its KEQ, the equilibrium constant for this reaction, which comes out to be NOBr2 divided by NO and Br2. Right? So I have to tell the order of the reaction with respect to NO. So NO to मुझे चाहिए. I want this NO there in the equation, but I don't want this NOBr in the equation. So what will be the value of NOBr there? The NOBr or NOBr2. Just give me a while. This is NOBr2. This is also 2. Please correct it. This is NOBr2. So this NOBr2 is equals to KEQ, concentration of NO and the concentration of Br2. So I can put this value here. So when I will be putting this value here, this comes out to be KEQ, concentration of NO, concentration of Br2 and the concentration of NO. So this comes out to be NO की concentration की power 2, Br2, that is KEQ or K rate. Right? So constants will be a constant. So what is the overall order of the reaction? Overall order क्या हुआ इस reaction का? That is 2 plus 1, which is 3. And the order of reaction with respect to NO only. Self or self, the order of the reaction with respect to NO only is 2. The right answer is B. Understood? This is the way how we have to do. So whenever in any of the mechanism there is any step which is in equilibrium, we have to consider that. जब भी हमारे किसी mechanism में अगर कोई step equilibrium में है तो हमें उसे consider करना पड़ेगा. Because the concentration of NOBr2 depends upon this equilibrium reaction. That how much it is going in forward direction. That's why. Think over. I'm saying, Swati, we know that the order of the reaction depends upon the rate determining step. Here, the rate determining step was the step number 2. So yeah, we have discussed, we have taken that the rate is directly proportional to NOBr2 and NO. Then why are we considering this equilibrium reaction? But we are considering this equilibrium reaction because here, that how much this NOBr2 is present to us, how much this NOBr2 is available to us. This totally depends upon this reaction. This totally depends upon this equilibrium reaction. If here the reaction is going more in forward direction, then the concentration of NOBr2 increases. And if this equilibrium goes in the backward direction, the concentration of NOBr2 decreases. So my rate of reaction depends upon this species. मेरा जो rate of reaction है वो इस species पे depend कर रहा है. And इस species का command किसके पास है? और इस species की command किसके पास है? NOBr2 के पास है. Right? अब जैसे ये NOBr2 क्या है? ये NOBr2 सिद्धार्थ है आज की क्लास का. इसी की मेहनत पे डिपेंड करेगा. He will be the rate determining step that how smartly he will be preparing and will be giving the examination and there will be the formation of product. But this is in equilibrium with this particular reaction as well.
लेकिन वो मम्मा पापा एंड एवरीवन और दूसरा अटेम्प्ट दूसरा कॉलेज साइमल्टेनियसली ये भी वो भी के चक्कर में क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम पे जा रहा है। तो इक्विलिब्रियम पे जाएगा तो रिएक्शन कैन गो बैकवर्ड, राइट? So this is being controlled by this equilibrium reaction. So we have to consider this factor as well. तो गड़बड़ हो सकती है. So that's why we have to consider this reaction as well. So because it is having a direct impact on this particular reaction. तो जो आपका equilibrium step है ना, उसका impact आपके main reaction पे पड़ सकता है. Okay? Second step is J, rate determining step, but the second step is being controlled by your first step. तो अब आपको first step पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि उसको equilibrium को कहाँ shift करें, here, there or there. No, I'm not blaming your parents. That I really respect them. I am not blaming beta. I am motivating you. I am pushing you to pursue your dream. पता है there are many times जब हम कुछ इन सब चीजों में like considering everything ultimately distract कौन हो रहा है? This is a distraction basically ना. आप अपने goal से considering everything, considering their goal. तो अब क्या होगा उससे फायदा कि आप उनका सपना भी पूरा नहीं कर पाओगे और अपना भी नहीं कर पाओगे. तो you will not make them happy and you will not be happy. And I know well parents have their happiness when you will be happy they will be happy. That's so true. Exactly. तो इसलिए दोनों चीजें नहीं मिल सकती ना. And ऐसा भी नहीं है that you are thinking something wrong. तो मैं आपको बोलूं कि नहीं सिद्धार्थ you are wrong, आप ऐसा मत करो. Just listen to your parents. आप सही कर रहे हो. That's why I'm supporting you. Okay. But they must also get that confident ना कि उनको भी तो आपको confidence में लेने की जरूरत है ना. You know, there would be one thing. Yeah, Gurpinder, just like you, they think I can't crack. You know, my parents, उनका भी एक सिंपल सा ये था कि लंगड़े घोड़े पे कौन पैसा लगाता है. समझ आया इसका मतलब? लंगड़े घोड़े पे कौन पैसा लगाता है. मतलब इफ यू फील लाइक दैट योर बच्चा विल नॉट बी एबल टू टेक दिस मच ऑफ एफर्ट या वो इतना एफर्ट नहीं ले पाएगा या इतनी मेहनत नहीं कर पाएगी, तो दे आल्सो फील दैट फियर कि मतलब उनको भी तो वो दिखना चाहिए आपके अंदर कि ना कि उनको भी तो आपके अंदर वो स्पार्क दिखना चाहिए ना कि नहीं मुझे करने देना चाहिए इसे, लेट हिम डू और लेट हर डू. तो ये चीजें होती हैं. हम लंगड़े हैं क्या? लंगड़े घोड़े से मतलब है द वन हु इज इनकैपेबल, है ना. तो आपके पेरेंट्स को आपके अंदर कैपेबिलिटीज तो नजर आनी चाहिए. यू नो, आई डिडंट गॉट मोटिवेटेड बाय एनी ऑफ द थिंग, बट दिस वर्ड दिस लाइन हिट मी. और इसने मुझे इतना हिट किया दैट आई वांट टू प्रूव कि मैं मेरे को भी अपने पापा का तेज घोड़ा बन के दिखाना है. आई विल प्रूव हिम दैट आई एम नॉट हिज लंगड़ा घोड़ा. और दैट वाज द ओनली थिंग. जो आप इतना मोटिवेशन वीडियो देखते हो, तो दैट वाज द ओनली थिंग दैट मोटिवेटेड मी. अब तो बहुत हो गया, अब तो कुछ करके दिखाना पड़ेगा, अब तो कुछ करना पड़ेगा. तो वो चीज आपके अंदर खुद से आती है, राइट? तो इस चीज ने मुझे पुश किया एंड आई एम हैप्पी टुडे कि पापा ने ऐसा बोला. शायद उनको मेरे अंदर का पागलपन जगाना था, मुझे मुझे कोर हिट करना था ताकि आई गेट समथिंग आउट ऑफ माय ओन, राइट? उनका इंटेंट अच्छा था, तरीका कुछ भी रहा हो, बट इट वर्कड, राइट? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं. Okay, do this question. The next question, do this question. Consider the reaction, और इस reaction में ये बताना है Cl2 when reacts with the H2S gives you S plus 2H positive 2Cl negative whatever the reaction is. The rate equation of this reaction is this. Which of these mechanisms is are consistent with the rate equation? इसमें से कौन सा mechanism है जो इस rate equation के साथ consistent है? मतलब which mechanism? Mechanism number A or the mechanism number B or both the mechanisms or neither A or B? Which would be consistent with this rate equation? This is the overall reaction. So as per this, the rate is equals to K, that is Cl2 and the H2S. So on which particular, okay, I'm giving a poll. Yeah, I'm giving a poll. Okay, Aparna, very nice, everyone. So basically, bache, see what has happened in this reaction. Only 45% of the students have given the correct answer, which is not so good. So basically, if you will look over the option number A, that is the mechanism number A, here we know this is a slow step.
This is a slow step on which the rate of reaction depends. So as per this, the rate is directly proportional to the concentration of Cl2 and the concentration of H2S. Are this Cl2 and H2S is in equilibrium in this particular step? No, this is not in equilibrium. So I need not to consider this reaction. So the rate will be this, the order will be 2. The order will be 2. If I look over the mechanism number 2, that is the mechanism number B, here my rate is directly proportional to Cl2 and HS negative. Okay, so in this Cl2 is there, but HS negative is not there. And this HS negative is also in equilibrium. So as per this, I can say that the K equilibrium is equals to concentration of H positive, concentration of HS negative upon the concentration of H2S. Finding the concentration of HS negative comes out to be KEQ H2S divided by H positive. Divided by H positive. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् Ultimately here the rate is directly proportional to Cl2 and H2S along with this H positive as well. So यहाँ पे as per this mechanism the rate also depends upon the H positive, but here this is saying that the rate is dependent on only and only Cl2 and H2S and H positive is 0. So which mechanism is right? A or B or both? Only A. So that's why only A mechanism is right. Now is this question clear to everyone? आ गया समझ में? Perfect. Okay. और अभी still Aparna was saying that she is having a doubt. Aparna, molecularity किसके ऊपर डिपेंड करता है? Molecularity, okay Aparna, you know molecularity depends upon the overall reaction. Molecularity overall reaction पे डिपेंड करता है. So will you be able to tell me the molecularity of this reaction क्या है? What are the coefficients of the reactants there? 1 and 1. So here the molecularity is 2. The molecularity depends upon the overall or the net reaction, but the order depends upon the rate determining step or the step which is the slow in the mechanism. Now I think these 2 points are very clear. अगला doubt है, ma'am, can you please revise your class 11 physical chemistry after this course? Definitely Kajal, है ना? When we will be up with this course, that is the physical chemistry, we will start with the class 11 physical as well. ठीक है? Class 11 के portions के लिए I will be giving you one update as well. मैं class 11 का कुछ topic शुरू करने वाली हूँ, so that you can also join me in those courses. ठीक है? तो class 11 के बच्चे के साथ आप भी join कर लेना. बात तो एक ही है. You will be able to complete the 11th portion. Yeah, only 8 more lectures we have. Okay. मैम एक बार ऑर्डर और यूनिट्स फिर से बता देना. ऑर्डर और यूनिट्स, ऑर्डर तो लाइक वी हैव डन अगेन. रोहित, अब देखो इसका ऑर्डर क्या होगा? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन एज पर दिस रेट लॉ? इस रेट लॉ के हिसाब से इसका ऑर्डर क्या है? 2. द ऑर्डर इज 2. अच्छा, अगर हमने मैकेनिज्म ये चूज किया होता है, वी वुड से इफ वी वुड से द मैकेनिज्म इज बी, तो एज पर द मैकेनिज्म व्हाट विल बी द ऑर्डर? कैन यू टेल मी एज पर द मैकेनिज्म बी व्हाट विल बी द ऑर्डर? 2 1. दिस इज 1 प्लस 1 and this is minus 1. Inverse हो गया ना? I can say that ना H2S की power minus 1 inverse. तो ये क्या हो जाएगा? What will be its order then? Positive 1. Got it? So it totally depends upon the order, the mechanism. Bhatia is having a doubt in question number 39. Oh. Bhatia, we have not yet done the first order. First we will be doing the first order, then you will be able to relate it with this question. है ना? अभी first order कहाँ पढ़ा हमने? Yeah, definitely guys, your time is over, almost over. ठीक है. Saloni is having some doubt. Saloni is there. Saloni, your doubt is कि I have said sodium is formed in cathode in nodes, and in the diagram you said it is formed in anode. So which one is right? So basically we were having an electrolyte which is NaCl, and here we have taken the electrodes. Let me see what is confusing me. So basically sodium is forming at cathode only. Saloni, the sodium is forming at cathode only. Then this sodium, ये sodium हमारा cathode पे ही बनेगा, because cathode पे ही तो हमारा reduction होगा, that is the addition of electron will occur over there.
Na पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन लिया, Na वुड बी देयर, रिडक्शन होगा, और अगर ये रिडक्शन हो रहा है तो दिस हैज टू बी, ये कैथोड पे हो रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये क्या हो रहा है, ये हमारा आयन बनके, ये आयन बनके हमारा एनोड पे जा रहा है, बट जो सोडियम का फॉर्मेशन है दैट इज ओवर कैथोड ओनली। ओके जो सोडियम का फॉर्मेशन है, जो हमारा Na बनेगा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, दिस Na पॉजिटिव विल स्टे विद एनोड, बट ये जो हमारा Na पॉजिटिव से Na बनेगा, ये कैथोड पे बनेगा। द रिडक्शन विल टेक्स प्लेस एट कैथोड ओनली। वो तो हम ये आयंस का इंटरेक्शन बता रहे हैं कि ये जो सोडियम आयन है, दिस इज दीस आर द आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, कि ये दीस आर द इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच आर मूविंग एज पर देयर ऑपोजिट पोलैरिटीज। इफ दिस इज पॉजिटिव इट विल गो टू नेगेटिव, इफ दिस इज नेगेटिव इट इज गोइंग टू पॉजिटिव। ओके यहाँ पे ये चीज शो की गई है। एंड अदरवाइज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो ऑफ कोर्स रिडक्शन विल अकर्स एट कैथोड एंड द ऑक्सीडेशन विल अकर्स एट द एनोड ओनली। ओके ये इलेक्ट्रोलाइट का था, दिस वाज नॉट मेटालिक। ओके इसलिए कंफ्यूज हुआ। ठीक है चलो गाइस बाय, टेक केयर।